Hello students, good morning everyone and welcome back in social science lecture class ninth geography where we are going to start new chapter which is physical features of India. So students, we have divided this chapter in two parts. So in this lecture we are going to complete part 1 and in our next lecture we will see their part 2 of the same chapter. So students, today's chapter is very interesting because here we are going to know about the different physical features of India and we will know about the formation of these physical features. But I know, my dear children, that question arise in your mind that what is mean by the physical features. So don't worry, when we will start the introduction of this chapter, we are going to start with the title of this chapter only. So moving further, I would like to give you today's thought as usual, which is difficult roads often leads to beautiful destinations. So don't quit. Yes, my dear children, whatever difficulties you may face in your life, or if you are facing any difficulty in your life, then don't quit those difficult roads because difficult roads often leads to beautiful destination. So without any disappointment, if you are having any challenges or any difficulties, face it with a positivity, face it happily and get the success there. So I hope, my dear children, you enjoyed the thought. So with this positivity, we can start today's lecture. So here in this slide, students, I have mentioned there that what contents we are going to see in this lesson. So this chapter we are going to start with the physical features of India, where we will know about the formation of not only the physical features of India but of the whole world's features. Then theory of plate tectonics we are going to know, where we will see means this theory is also about the formation of physical features only. Then in next point we will see there the movements of the plates, and because of this movements of the plate some boundaries have been formed there. So which are those boundaries? So we will see in detail. So in part 1 we are going to cover these 4 points, students, and in part 2 we will cover remaining points where we are going to know about major physiographic divisions, where we will know the formation of the Himalayan mountains, the formation of the northern plains, the formation of the peninsular plateau, the formation of Indian desert and the coastal plains and the island. And at the end of the lecture, we will see there the conclusion. So I hope, my dear children, you have cleared with the content. So without wasting time, let's move further. So here, first of all, I would like to give you introduction of this chapter. So what is the name of this chapter, my dear children? Physical features of India. Now question comes here, what is mean by physical features? So whatever we can see around us, such as mountains, plains, desert, plateau, island. So all these things, it is known as a physical features. So here in this chapter, we are going to know about the formation of these physical features of India as well as of the whole world. Whole world means we are not going to see in detail about the whole world, but yes, the basic idea of the formation of the world's physical features we are going to clear here. So I hope, my dear children, the title of the chapter, it is clear here. Now you must be wondering how these physical features have been formed. So we will learn more about major physical features of India
and how they have been formed. तो स्टूडेंट्स मे बी ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकता है कि येस, हम लोग रॉक्स को देखते हैं, जब भी हम लोग रिवर्स को देखते हैं, हम लोग वैलीज़ को देखते हैं, आइलैंड को देखते हैं, प्लेट्यूज को देखते हैं या डेजर्ट को देखते हैं, तो ये सवाल दिमाग में आता है कि कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे बड़े बड़े माउंटेन्स है, या कहीं पे आइलैंड है और कहीं पे सीज़ है. तो ये सारा फॉर्मेशन जो भी हुआ है, तो ये सारा फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा और किसने किया होगा. मीन्स ऐसा तो नहीं है कि कोई मैजिक हुआ होगा या कोई मीन्स बड़ा राक्षस रहा होगा और जिसने मीन्स एक हाथ घुमाया और उसकी वजह से ये सारा फॉर्मेशन हुआ. सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सम theories is available behind the formation of these physical features of the world. So let's see this interesting story of the formation of this physical features of India. This is really interesting story, students. Means here in this chapter you are going to know the mechanism of the formation of this physical features. Means exactly how these physical features have been formed. Isn't it exciting? Means ये जो बड़े हिमालय जो है ये इतना बड़ा क्यों है. Okay, then means जो भी सी है वो कैसे फॉर्म हुए. So all these are the exciting things we are going to know in this chapter. So here I have mentioned about our India, that if we take an example of India, so in India only different things are available there, variations are available there, because India is a vast country with the varied landforms. Yes, in our earlier chapter also we have seen there. Means area wise if we see, India is on which number? On 7th number. So India is a vast country with a varied landforms and physical features. Yes, my dear students, India is a very vast country with, means if we see there the landforms, the different variation is available there, and physical features also. In physical features means in mountains and rocks, valleys, plateaus or islands. So here I have mentioned it has big Himalayas. Means यहाँ पे आप लोग देख सकते हो in India, that is these are the Himalayan region. Okay, so it has big Himalaya, beaches in the south. Means here you can see the beaches in the south, the Thar desert in Rajasthan and Deccan Plateau. Means here about India you can see that this is our India. So it is rich with the varied landforms and the physical features. So my dear students, isn't it important that how did the formation of this varied landforms have been formed? Is how did the formation of this varied landforms and physical features have been happened? So let's start the story of the formation of this physical features. यानी ये चैप्टर एक कहानी है किस चीज़ की? तो ये फिजिकल फीचर्स जो भी है, कौन से फिजिकल फीचर्स? तो माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, आइलैंड, ये कैसे फॉर्म हुए, ये कहानी के रूप में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स. सो हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे हमने मेंशन किया है दैट सी the relief and the physical features of India have evolved through the different geological periods. अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि यस ये कैसे फॉर्म हुए होंगे, तो ये हम सारे मीन्स ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. सो द रिलीफ एंड द फिजिकल फीचर्स, ये जो भी रिलीफ है, रिलीफ यानी अगेन फिजिकल फीचर्स यू कैन से देयर ऑफ इंडिया हैव इवॉल्व्ड थ्रू द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स. यानी इनका जो इसके फॉर्मेशन का जो भी पीरियड है, जियोलॉजिकल पीरियड यानी जो भी इन जोग्राफी जो भी पीरियड मेंशन किया गया है, इट इज़ डिफरेंट देयर. यानी सम फीचर्स हैव बीन फॉर्म 500 years ago, or some features have been formed 1000 years ago. And during the process of formation of India as it's look today, और ये जो भी प्रोसेसेस हुई ऑफ फॉर्मेशन आज जैसे हमें इंडिया दिखता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हमें ये सारा इंडिया आज जिस शेप में दिखता है वो क्यों दिखता है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन. और वो फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन सा था जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, which I have mentioned here, withering, deposition and erosion. So besides geological formation, a number of process is responsible for the formation of this
physical features such as weathering, erosion, and deposition. Because of these process, physical features have created and modified the relief to its present form. Means it has not only created but it has modified also, and we can see these physical features in today's form. अभी वो process कौन से students? Withering, deposition and erosion, which you have already studied in your 8th standard. Okay. So I hope till now it is clear here. Now you can see that means again other means another question comes there, that means all the physical features are varied from one place to another, or all the physical features are varies from one region to another. Now why these things happens? So here I have mentioned that even the color of the soil varies from one region to another, यानी जो कलर होता है सॉइल का वो भी एक जगह से दूसरी एक रीजन से दूसरे मीन्स इफ़ वी कंपेयर विद द टू रीजन, सो इट इज़ डिफरेंट देयर. For example, in Maharashtra, we find both black soil and red soil. But in Madhya Pradesh, we find only red soil. So this variation in soil is due to the kind of rocks from which they are made. So ये जो भी वेरिएशन है सॉइल में या जो भी वेरिएशन है फिजिकल फीचर्स में, तो behind it different reasons are available there, such as here the variation of soil has been mentioned here due to the rocks, means the variation of soil is due to the kinds of rocks happens there from which they are made. यानी जो भी सॉइल जिस रॉक से बनी होती है उस रॉक के वेरिएशन की वजह से क्या होता है, ये सॉइल्स डिफरेंट होते हैं. नाउ means we have seen there student in 8th standard also you have studied about the rocks. So we find there the different types of rocks. Some are very hard like marble which has been used for making the ताजमहल. कुछ ऐसे rocks होते हैं कि जो बहुत hard होते हैं जिसको ताजमहल जैसे monuments बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. And some are very soft like soapstone which is used in making talcum powder. And some are कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत soft होते हैं कि उन रॉक का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर टैल्कम पाउडर बनाने के लिए या फिर सोप स्टोन बनाने के लिए. देन द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जस्ट नाउ वी हैव सीन. सो माय डियर चिल्ड्रन, हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन. हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशन? कभी आपने ये सोचा है कि ये वेरिएशन क्यों है, क्यों पूरे वर्ल्ड की या क्यों पूरे इंडिया की सॉइल एक जैसे नहीं है? क्यों हम महाराष्ट्र में एप्पल को नहीं उगा सकते, या क्यों हम एप्पल का प्लांटेशन नहीं कर सकते? सो हैव यू एवर वंडर देयर और हैव यू एवर थॉट? सो मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन. तो ये जो भी वेरिएशन अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स इन फिजिकल फीचर्स, तो ये वेरिएशंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस फिजिकल फीचर्स. तो अभी ये जो भी फॉर्मेशन हुआ है, तो ये फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, एग्जैक्टली नोबडी नोज. बट ऑन द बेसिस ऑफ सम थियरीज साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइड देयर टू tell about the formation of this physical features, which I have mentioned in furthermore slide. Here I have mentioned student one line, the physical features of India that you see today are the result of all these processes. Means just now we have seen there which processes? Process of weathering, erosion and deposition. So India is the result of all these processes. Means today's in whatever form we can see to India, so this is the result of all this process. Now students, no one knows how exactly India was formed, or no one knows how exactly all these physical features have been formed. However, some scientists had several theories which try to explain the process. Despite of all these things, some scientists they have tried to explain the process. One such theory is the theory of plate tectonic. और उसी में से एक theory यहाँ पे दी गई है students,
which is known as a plate tectonic theory. Means nobody knows there that how exactly these things have been formed, or how exactly these physical features have been formed. But yes, on the basis of certain evidences, some scientists, they have published their some theories. So one theory is available in your textbook, which is known as a theory of plate tectonic. So in our furthermore slides, students, we will see there what is meant by the plate tectonic theory. So here I have mentioned tectonic plate theory. So what is exactly mean by the plate tectonic theory? So before explanation of this plate tectonic theory, students, I would like to tell you that this can be the direct question in your exam, that explain the plate tectonic theory. So this is very, very important as far as your exam is concerned. So let's see what this plate tectonic theory tells us. So according to this theory, the crust, means upper part of the earth, has been formed out of 7 major and some minor plates. So this theory tells us, their students, that the upper part of the earth, which is known as a crust, or which is also known as a lithosphere, so it has been formed out of 7 major and some minor plates. ये कितनी प्लेट से बना है? तो 7 मेजर प्लेट्स से बना है. अभी ये 7 मेजर प्लेट्स कौन से हैं, तो हम लोग वो मीन्स इन फर्दर मोर स्लाइड आई विल क्लियर टू यू. बट बिफोर मूविंग फर्दर, सर्टन थिंग्स आई वांट टू clear here, my dear children. In your 8th standard, you have seen or you have studied about the interior of the earth. आपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स. सो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और अर्थ हैज मेड अप ऑफ सेवरल layers or the some parts you can say there. So the means upper part of the earth, it is called as a crust. Then below that mantle is available there, and the innermost part is called as a core. If you see the boiled leg, and if you break that boiled leg, then whatever the interior part of that boiled leg, it looks like the interior part of the earth only. Means जो bulk होता है, it can called as a core of the earth. Then उसके बाद का जो part होता है, it can called as a mantle. And then जो outer layer जो होती है कैल्शियम की, it can called as a crust. So students, वो जो outer layer होती है, that outer layer, it is divided, it has been formed out of 7 major and minor plates. Now these plates are floating on mantle where the molten magma is available there in semi-liquid form, and that's why these plates are continuously moving there. Now students, you can ask there the question that teacher, if those plates are moving there continuously, then why do not we feel there? So my dear children, here I want to clear the doubt that whatever the movement of those plates happens there, those movements are very slow. That's why we do not feel those movements. As earth is rotates there, that also we can't feel. So like that, because it's moving slowly. But if these plates move fast, then definitely we feel there the vibration, which is called as a earthquake. So my dear children, अच्छा है कि इनका movement क्या है, slow होता है, and because of that slow movement we do not feel it. But अंदर ही means formation लेकिन होते रहता है. So thousands of years ago, means on the basis of this theory, formation of physical features, it has been formed there. Means अंडर दिस थियोरी, इस थियोरी के मुताबिक फिजिकल फीचर्स फॉर्म्ड हुए हैं, एज वेल एज जो 7 कॉन्टिनेंट्स है. माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर वॉट एवर द 7 कॉन्टिनेंट्स आर अवेलेबल. सो दीज 7 कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू दिस प्लेट्स मूवमेंट. ओके, so now let's try to understand here what are those movements of these plates. What are we seeing, students? Plate tectonic theory. According to this theory,
what we have seen just now, the upper part or the crust of the earth, it has been formed out of 7 major and minor plates. अभी इन प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है और उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ है, जो हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है उन कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, एज वेल एज फिजिकल फीचर्स जो भी अवेलेबल है, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड, उनका भी फॉर्मेशन हुआ है. सो लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी देयर द प्लेट मूवमेंट्स. So, the movement of these plates have changed the position and size of the continent. As I have mentioned earlier also, my dear children, the movement of these plates, because of these movements of these plates, what has changed? It has changed the position and the size. इसकी वजह से, इस प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स? चेंज हुआ what? पोजिशन एंड साइज किसका? ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ईयर्स, over millions of years. Such movements have also influenced the evolution of the present landform features relief of India. Means इस प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये जो फॉर्मेशन हुआ 7 कॉन्टिनेंट्स का, इसकी साइज, पोजीशन सब चेंज हुआ. एंड प्रेजेंट डे वॉट एवर वी आर हैविंग देयर द 7 कॉन्टिनेंट्स वो हमें मिले, एज वेल एज बिकॉज ऑफ और ड्यू टू दिस प्लेट मूवमेंट्स वी हैव गॉट हियर द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स or the relief of India, which we known today as a Himalayan mountains, northern plains, etc. ओके, उनके फॉर्मेशन के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इन सारी फिजिकल फीचर्स का जो भी फॉर्मेशन हुआ है, या ये रॉक्स जो भी है, या ये जो भी माउंटेन्स है, तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो लेट्स सी. इस थियोरी के माध्यम से हम लोग वो जानेंगे स्टूडेंट्स. नाउ लिसन हियर. कॉजेस ऑफ प्लेट मूवमेंट. अभी इन प्लेट्स का मूवमेंट क्यों होता है, और जो भी मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है. सो द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट. ये जो मूवमेंट होता है ये क्यों होता है? एज आई हैव टोल्ड यू, दीज प्लेट्स आर ऑलवेज फ्लोटिंग ऑन द मॉल्टन मैग्मा. सेमी लिक्विड फॉर्म में जो अवेलेबल होता है उसके ऊपर ये प्लेट्स क्या होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग इट बिल्ड अप देयर द स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स. प्लेट्स में क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू द फॉल्टिंग एंड वल्केनिक एक्टिविटीज़. अभी इन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लीडिंग टू मीन्स इसका रिजल्ट होता है टू फोल्डिंग, फ्लॉटिंग एंड वल्केनिक एक्टिविटीज़. फोल्डिंग यानी बहुत सारे मीन्स कुछ रॉक्स जो भी ये सारी प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बाउंड्रीज जो भी फॉर्म होती है इस प्लेट की मूवमेंट की वजह से, मैं ये तीनों वर्ड आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. नाउ लिसन. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स सम बाउंड्रीज हैव बीन फॉर्म्ड देयर. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. सो द फर्स्ट बाउंड्री which is known as a transform boundary. In the event means in this boundary or in this transform boundary, in the event of two plates coming together, they may either collide and crumble. इस बाउंड्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो जो प्लेट्स होती है दे कम टुगेदर, दे कोलाइड एंड क्रम्बल. वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होती है या समटाइम्स क्रम्बल्ड होती है, घिसी जाती है, और वन में स्लाइड अंडर द अदर, या फिर एक दूसरे के ऊपर भी आ जाती है. एट टाइम्स दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली, या समटाइम्स हॉरिजेंटली ऑल्सो वो मूव करते हैं, हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर, हॉरिजेंटली एक दूसरे के पास से पास्ट भी हो जाती है, एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. जब दो प्लेट्स का स्टूडेंट्स इस तरीके का मूवमेंट होता है, व्हेन दीज टू प्लेट्स मूव लाइक दिस and when it passed horizontally each other, that time it forms there the transform boundary. And because of this transform boundary, sometimes volcanic eruption happens there, or sometimes earthquake also happens there. So students, you need to understand here, because of the transform boundary, what happens there, sometimes volcanic eruption happens there or earthquake happens there. Now we are moving further, the second boundary, which is convergent boundary. So how did this, or how this boundary formed there? So students,
while some plates come towards each other, जब दो plates एक दूसरे के पास आती है and form convergent boundary, that time क्या form होता है, convergent boundary form होता है. मीन्स जब दो plates एक दूसरे के पास आते हैं तो फोल्डिंग का प्रोसेस होता है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट, ये जो 3 वर्ड्स है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वल्केनिक एक्टिविटी. तो वल्केनिक एक्टिविटी हमने अभी देखा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, तो दो जो प्लेट्स होती है हॉरिजेंटली एक दूसरे के पास से पास होती है, या समटाइम्स इट्स कोलाइड्स ऑन वन टू अनदर. सो दैट टाइम कौन सी बाउंड्री फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म होती है. एंड ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री व्हाट हैपन्स, वल्केनिक एक्टिविटी हैपन्स, और sometimes earthquake also happens. Now due to this convergent boundary what happens, first of all try to understand that what type of movement happens there. So what type of movement happen there, in this boundary or in this convergent boundary two plates come towards each other. दो plates एक दूसरे के पास आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसमें दिखाया है that because of this convergent boundary what happens, दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है, देन फोल्डिंग का प्रोसेस होता है, एंड इट बिकॉज ऑफ दिस फोल्डिंग प्रोसेस व्हाट हैपन्स देयर, माउंटेन्स, formation of mountains happened there. So I hope students this convergent boundary is clear here. Now last or the third type of boundary, that is divergent boundary. So name only suggests a student divergent boundary means ये एक दूसरे के पास से अलग होते हैं, मीन्स सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री. व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास से क्या होते हैं, अलग होते हैं, सो दैट टाइम इट फॉर्म्स देयर डाइवर्जेंट बाउंड्री. एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंट बाउंड्रीज some water bodies have been formed there, rivers or valleys we can say there. So means here which process happens there, so floating का process होता है यहाँ पे. So I hope students this thing is clear to you. So this is all about plate tectonic theory. Means according to this plate tectonic theory what you have to understand here, that our upper part of the earth, it is made up of some major and minor plates. So how many major and minor plates are available there, 7 major and minor plates are available there. And because of this movements of this plate, it forms there the different boundaries. Which are those boundaries, transform boundary, convergent boundary and divergent boundary. And because of this boundaries what happens there, the formation of the physical features have been happened there, as well as due to this plate movements what happens students, the movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. इन सारी प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंट्स का साइज चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, एंड वी हैव गॉट टुडेज प्रेजेंट 7 continents. So I hope my dear children the idea of plate tectonic theory is cleared here. Now we are moving further about India's formation, यानी इंडिया का कैसे फॉर्मेशन हुआ. So let's move further on page number 7. Now here one very interesting story of this chapter I want to tell you, means this, and this is the story of Gondwana land. So students, before moving further towards this story, I just want to conclude about the plate tectonic theory, that ये जो plate tectonic theory है, in this theory you will get the base for the chapter. Means what is students, what is the name of our chapter, physical features of India. So whatever the formation has been done here of this physical features, it due to the movement of this plates. Understood? So I hope it is clear now. So what does this theory wants to tell us, that
The earth crust is floating on molten magma, and because of this floating, different movements happened there, and due to this movement, what happened there? Formation of physical features happened there. I hope it is clear now. Now moving further towards the next topic, that is Gondwana land. Now let's see, students, what is this Gondwana land. So Gondwana land originally consisted of a number of land masses including South America, Africa, Antarctica, Australia and Indian subcontinent all joined together. Means ये जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड इन ओल्डन डेज इट वॉज देयर वन कॉमन लैंड where how many countries available or included? Africa, India, Antarctica, Australia and South America. यानी पहले ये सारे कंट्रीज़ को एक साथ कौन से नाम से जाना जाता था? तो गोंडवाना लैंड. देन हाउ डिड इट सेपरेटेड? तो ये सेपरेट कैसे हुआ? तो जस्ट नाउ विच थियरी वी हैव सीन स्टूडेंट? प्लेट टेक्टोनिक थियरी we have seen, where what we have seen that due to the movement of plates, what happens there? The formation of physical features happened there, as well as due to this movement of plates, what changes there? Size and location of continent as well as countries, it has changed there. So now let's try to understand. ये जो गोंडवाना लैंड था पहले एक साथ अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एक साथ था, देन ये स्प्लिट कैसे हुआ? सो ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट split the crust into a number of pieces. Now conventional current means कौन सा current? अभी electric current नहीं. Okay, conventional current means what have I told you earlier, that molten magma is available there below the crust. So due to that means due to that molten magma, or because of that molten magma, what is available there? Heat is available there, and because of that heat, conventional currents always pass there, and because of this conventional current, it's split the crust into number of pieces. क्या हुआ? ये जो कन्वेंशनल करंट्स है कंटिन्यूसली पास होते गए, और इस कन्वेंशनल करंट की वजह से क्रस्ट जो है वो नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड हुआ, दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टूवर्ड्स नॉर्थ. ये कन्वेंशनल करंट्स की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट? जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यानी ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो एक साथ था, वो स्प्लिट होके कहाँ पे गया? इट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड वेयर इट मूव टूवर्ड्स नॉर्थ. ओके, क्लियर? देन द नॉर्थवर्ड्स ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलाइजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. और ये नॉर्थ की तरफ जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गया, तो ये किसको जाके टकराया? जो यूरेशियन प्लेट जो था उसको जाके टकराया. अभी उसको जाके टकराने के बाद व्हाट हैज़ हैपेंड देयर? सो ड्यू टू दिस कोलाइजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर accumulated in the geosynclines known as a Tethys Sea. Now try to understand students, don't confuse here that ये जो भी बड़े बड़े words आ रहे हैं उनको सुन के confuse नहीं होना है आपको. What did I tell you? That Gondwana land, it was means included there India, Australia, South Africa, South America and Antarctica as one single landmass. It was available there. Then what had happened there? Due to the conventional current, ये क्या हुआ? Split हुआ. जब ये split हुआ तो कौन सा plate separate हुआ from गोंडवाना land? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हुआ, और ये किसकी तरफ गया? टूवर्ड्स नॉर्थ. जब ये नॉर्थ की तरफ गया तब ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला गया तो इसको बीच में कोई मिलेगा नहीं. ओके, तो इसको बीच में मिला यूरेशियन प्लेट, ये कोलाइड हुआ यूरेशियन प्लेट के ऊपर. अभी ये जब कोलाइजन हुआ यूरेशियन प्लेट के ऊपर, सो ड्यू टू दिस कोलाइजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर अक्यूमुलेटेड द जियोसिंक्लाइन नोन एज द टेथस सी. अभी ये जो जियोसिंक्लाइन नया वर्ड आया है, पहले इसको समझ लो. तो उससे पहले एंटी सिंक्लाइन एंड सिंक्लाइन समझ लो. एंटी सिंक्लाइन नहीं समझाऊंगी स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी. जस्ट सिंक्लाइन मीन्स व्हाट? सिंक्लाइन मीन्स अप जिसे हम कहेंगे. ओके, सो बिकॉज ऑफ मीन्स when Indo-Australian plate it split from the Gondwana land and moved towards north, that time it collided
on Eurasian plate, or the collision, that time the collision happened of this plate with the Eurasian plate. So when this collision happened with the Eurasian plate, that time between these two plates what was available there? Tethys Sea was available there. One water body means जिसे Tethys Sea कहा गया है वो अवेलेबल था, और वो जब अवेलेबल था तो ये जो दोनों प्लेट्स का जब कोलाइजन हुआ तो उसमें जो भी सेडिमेंट थे तो वो सारे सेडिमेंट्स फोल्ड होके क्या फॉर्म हुआ? एक माउंटेन सिस्टम फॉर्म हुआ जिसे हम वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय के नाम से जानते हैं. अभी जो सिंक्लाइन यानी क्या कि वो जो भी टेथस सी में, सी स्टूडेंट्स, इन अ सिंपल वर्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट ये जो दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराए, जब इनका टकराव हुआ तो बीच में क्या था? टेथस सी था. अभी ये जो टेथस सी था तो इन दिस जो सिंक्लाइन मीन्स जो नीचे जो भी सेडिमेंट्स थे तो इनके इन दो प्लेट के टकराव के बीच में जो भी नीचे के सेडिमेंट्स जो भी थे वो ऊपर आए, और इतने ऊपर आए कि कौन सा माउंटेन फॉर्म हुआ? हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुआ. नाउ स्टूडेंट्स, इन योर माइंड डेफिनेटली डाउट कैन बी हैपन देयर, और डेफिनेटली डाउट कैन अराइज देयर दैट टीचर दो प्लेट्स की टकराव की वजह से इतना बड़ा माउंटेन कैसे फॉर्म हो गया? Is it really happened? So yes, my dear children, it's really happened there because these plates were not the small plates. Okay, ये बड़े बड़े प्लेट्स थे, एंड व्हेन इट कोलाइडेड टूवर्ड्स ईच अदर, इनके बीच में था टेथस सी, और इस टेथस सी में जो भी सी जो होता है स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि सी में सिर्फ पानी होता है, लैंड अवेलेबल नहीं होती है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लैंड इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, एंड ऑन दैट लैंड व्हाट इज अवेलेबल देयर? सेडिमेंट्स अवेलेबल देयर. तो वो जो भी सेडिमेंट्स थे इन दो प्लेट्स के टकराव में क्या हुआ? वो जो सिंक्लाइन हुए मीन्स वो ऊपर की साइड में आए, एंड व्हाट डिड फॉर्म देयर? हिमालय माउंटेन फॉर्म देयर, एज आई हैव मेंशन हियर. नाउ व्हेन आई विल रीड दिस थिंग्स इट विल क्लियर टू यू. So, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosynclines known as the Tethys Sea were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. This uplift caused a depression in the north. This depression formed a basin that concealed the sediments of the river flowing from the mountains. The area in the north which is rich in fertile alluvial soil is called northern plains of India. Different physical features of India formed at different times. The oldest physical features of India is the Peninsula Plateau. It's composed of igneous and metamorphic rock and has hills and wide valleys. The Himalayas are relatively younger physical feature. They consist of high peak, deep valleys and rivers that are fast flowing. Now students, ये जो भी मैंने mention किया है, so all these things we are going to know in our next part. But till now what you have to remember, आप लोगों को क्या याद रखना है, हमने अब तक क्या देखा. So in this part what we have seen. So before concluding I would like to revise here the things whatever we have seen. So till now what have we seen? India is a vast and varied landform. So students, one spelling mistake is available here, that it should be varied there. So avoid that spelling mistake. Why? What we have seen here, India is vast and varied landforms. हमने देखा India vast and varied landform है. तो वो कैसे varied है, तो क्या formation था, what was the formation of physical features there, we have seen there. And exactly how did that formation have been done, so we have seen there one theory. And what was the name of that theory? That is plate tectonics theory, where we have seen the upper part or the crust of the earth, it has been divided in 7 major and some minor plates, and due to the movement of this plate different physical features have been formed, or the size and the location of continents also change. Then we have seen about Gondwana land, means what was the Gondwana land? So it was there the single landmass where included
India, Australia, South Africa, South America, and Antarctica. And due to the plates movements, these countries or this land splitted in today's countries which we known as India, Australia, South Africa, South America, and Antarctica. So I hope, my dear children, you understood till now whatever the part I have explained. In second part, what we are going to see. So in second part, major physiographic divisions we are going to cover, where we will see the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsula plateau, the Indian desert, the coastal plain and the island. Means ये जो भी सारे माउंटेन्स है या फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है या फिजिकल फीचर्स है एग्जैक्टली इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. बट टिल देन स्टूडेंट, what you have to keep in your mind that the plate tectonic theory and the formation of these physical features. So thank you so much students for listening me, and thank you so much for staying connected with this online classes. So stay blessed, stay healthy and stay happy. We will meet soon in our next lecture. Till then, bye and take care.